other classes, correct? For my class especially. तेरा पूरा ग्रुप तो नहीं चलता था, तेरा नहीं था, साइंस में अच्छा। Now the first and the foremost thing we have to get right with the syllabus. Am I correct? Tell me exactly where I left you. Long time we didn't touch it. ये काम कर, वो चालू रहा है, ये भी चालू है। Let's first keep the first. We are in the cost chapter, correct? Of public finance. Oh, meaning of public finance एक काम करना पड़ेगा, ये देखिए। ऐसे कैसे कर लेते हैं? जैसे कोई नॉर्मल, this is 2023. But cross check ना क्या है वो तो बता। What is? तो फिर कैसे अभी मैं करूँ? वेरी गुड, सब उसी के ऊपर छोड़। तू क्या करता है? वैसे ही ना क्रॉस चेक। ओके, मेरे पास उसका नंबर है, करूँ? And let him come ना, बेचारा फिर बात करे। Yesterday also called. ये मुझे मेरा मास्टर्स का लगा, मेरा यूटी का यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मुझे कॉल करेगा। आ रहा है क्या? तेरे से इधर आके बैठिए। मास्टर्स को कोई नहीं जाता है। मैं बस अभी के। साकेत where are you? तो भाई साहब 12:30 का है। मैं और भूमि कब से इधर बैठे हैं? 45 में तो जल्दी से बोल दिया है, बट इट इज 12:30। एक काम कर सकेत, हाँ जल्दी आ, एंड ऑन द वे सेंड मी द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कुछ गड़बड़ बोल रहा है, ये जरा पुलिस से बात कर। Only sources, are you correct? फिर क्या? Take that and go. I think cost we have finished already. वो भी हो गया, बैंक का हो गया, वो भी यार। आज और कल 2 दिन लेक्चर है, फिर हम लोग इको को भी गुड बाय बोल देंगे। Oh, this is what I was waiting for. 650. Himalaya. This is truly adventurous bike. पहला 250 सीसी था, फिर 400 किया, फिर 550, 650 आ। But this will come next year. Mine is a Harley Davidson, but that is very costly to maintain. GSB, ये का वो कंपनी ठीक है, मैंने चलाया, उसमें एक अफ्रीका क्वाइन आता है, वो चला, मुझे अपने 11 लाख 18 लाख का। Don't sign for you, you sign for yours. तेरा दोनों लेक्चर साइन कर दूँ तो। Let us wait. 12:45 पकड़ के बैठा है। What time my break is? 2:30. Shall we teach that public finance? Shunita बोलो। Have you done DS31 below? Have you लिया? That is BMW का? नहीं तू चलाया है क्या? Very good. फिर काय का तो तेरा फेवरेट? दिखना नहीं। बॉय को बाइक नहीं चलाना है। I'm doing this back for last
15 years से तो पहले से मैं चला ही रहा। अभी मेरा फैमिली मुझे बाहर टूरिंग नहीं कर रहा, अभी जाता। Okay, let's write the meaning of the topic. Meaning तो है ना? So first we'll write meaning. Second we'll write definition. I think by the time Saket will join, और क्या है? देख लियो उधर क्या है? Meaning है, sources है, definition भी नहीं है. That is public finance. Look at this. Meaning, sources of public revenue. बस meaning है. Meaning और source. ये भाई साहब, ये revenue में गया. हाँ, सिर्फ ये लेके आया. पूरा चैप्टर में. हाँ. ये तो मैंने entirely पूरा चैप्टर में मजा. पब्लिक रेवेन्यू में क्या क्या है? सोर्सेज है. Tax sources of public revenue chapter का नाम. Only public revenue. First tax revenue है. हाँ, non tax भी नहीं है ना. एक दे पेंसिल दे दो. Non tax revenue है, but like meaning है. First is demonetization के नंबर में कर दिया हम chapter. Scope में only meaning, not even definition. Public वही ना meaning ही तो है. Just like student. Public revenue में tax sources है. Non tax भी. ऐसे meaning का example है. Meaning है example. Tax revenue from meaning is this is main features है, objective features, like direct tax, meaning merits and demerits. So features है, okay, that is direct tax. Yes, the direct tax. Clearly, take up figure. You couldn't cancel. All. Okay. So directly write meaning. Meaning of what? Public finance. Seriously पढ़ाई क्या? तुम्ही तेरा परफॉर्मेंस पता नहीं कैसा है. इसमें बहुत करने लगता है परफॉर्मेंस. जो many subjects. Why? You don't understand my lectures when I'm teaching. And why are you so poor? Stuff was there that time learning. So, ठीक है. अभी सर सेकंड टर्म से बात करेंगे. थर्ड टर्म अभी जो आ रहा है उसका क्या? Just because I didn't teach you, you didn't get bad. You got bad marks. Just because I didn't study. Second, sir, now I studied, but I didn't. Paper cancel. Paper was there. I was not. The sun. The sun. At least I thought you will get good marks. Sure. CA में क्या issue है? CA में क्या? कितना मिला first time? 50. Okay, second. Already there are how much? 100 is 8. Eco is more like objective. CA is more like subjective.
ठीक है अभी मैं आज और कल है ना मेरे पास देखना चलो राइट डाउन पब्लिक फाइनेंस it is the study of financial aspect of the government for a given financial or for a financial. Neither ask me any queries, not tell any problem. How will I help you? I don't know. ये भी अभी मैं पूछने के बाद ही बोलता नहीं ये जो मैंने पूछा after you never take any initiative. Why studies में when after the board exam then after your career अरे कुछ तो बोल हाँ क्या so you know that I am ready to help you in all corners but you are right up ओपन भी नहीं बिन करके मुझे पीडीएफ में भेजने के जगह पर बिन का भेज तो देखो the ICSE first of all it doesn't have any continuation in Bombay 11th and 12th शायद अभी रहेगा but the schools are not very good next you will be going either to CBSE or to state. So if your percentages are 80 and above, then you will get one of the best. Because ICSE is given more the पहला कैसा था IB, ICSE, CBSE, फिर state. क्या हो जाता है ICSE portion what you are studying in 9th and 10th ना the state board will have it in 11th and 12th. And CBSE what they are studying they are quite okay. I remember I was ICSE topper during my 9th and 10th. I got extra 10% on marks, 10%. So I remember I got around 90, not 90, 89 points. So I was close to 98. So some people put 98 case in the 89, but since I'm going to the state board, they give extra 10%. Why I'm saying then whatever first year and second year, my degree qualifications. I used to get very easy. So these things we have already done in my 9th and 10th. और वो मुझे डिग्री में आता है जैसे मैथमेटिक्स में यू हैव मैथ ना यू हैव एलपीपी लॉगरिथम्स है गेम थ्योरी है मैट्रिसेस है गेम थ्योरी है मैट्रिसेस आता है तो एक्सरसाइज ये सब हमको डिग्री में आया जबकि हम लोग 11th 12th में कर लिया था उसका बाकी है उसका नाम क्या सारे को आ रहा है हमारे तो फिर साथ में लिखना if you put little bit even 2 months 3 months in there it is not bad ज़्यादा एडवाइस नहीं करता हूँ पूजा में तो अगर मेरे पास लेकर आएगा तो आई एम रेडी टू हेल्प सीना है सीए में करने का वो तो 12th के बाद करेगा ना लेकिन अभी 10th से एडमिशन ले रहा है सीए का अच्छा ये सब तो लगा सीए का क्या है पता है वेरी गुड ठीक है लेकिन तो कैसा पढ़ता मुझे वो बताएगा तो मैं कैसा पढ़ने का मैं क्यों मेरा नोट से क्यों नहीं पढ़ रहा है with your group either boys or girls who is Sriraj that fellow who says thank you for sharing तो पीछे बैठते जो ग्रुप में हाँ तो श्रीराज से पूछना इजी है हेलो एंड वैष्णवी मैं बोलूं उसको मैं तो करूंगा ही because you guys are always coming sitting to the lectures that's what I'm saying ठीक है लिख दिया second point it is generally defined in different ways it is generally defined in different ways hyphen write the next open inverted command it is the investigation into the
principal and expenditure. अच्छा एक काम कर ऐड नहीं है principal of state expenditure and state revenue. Principal of state expenditure and state revenue. वो मैंने ऐसा तुझे लिखने के लिए you write it in one sentence. Okay. Principal of state expenditure and state revenue. Okay. Close it up. Come on. According to Bastable public finance deals with expenditure and income. State and country. You have sent it in a different format. The heading, write the meaning or because I might have written not fully. Only that's what we are doing. Look at chapter cut up. What I'll explain and we'll do it. Fail to open the file. इधर PDF लिखा है, इधर वो पेन नहीं मिलता. You got economics or CA. Let me know which chapters. Okay. Geography exactly which are the. You got tomorrow mock test, na? Did you bring geography today? Second lecture last 15 minutes will say. Did you mark what all the problems chapters? Very good. वो तो मैंने दिया है ना क्लास में. तुझे कौन सा चैप्टर्स में प्रॉब्लम है वो तो मुझे बताएगा ना, then I will be able to help you. तो प्रोग्राम के नाम से
Okay. Those two also I can't explain. Take a minute. No? Okay, write the next chapter name. I get out there. Definition. Like first of all, it's very simple. It is the total revenue and expenditure of a state. What does state mean here? Government. Is there a need for a government to calculate the revenue and expenditure? Why is it so? Why is it so? Because every time, like you and me take a loan for a business, even the government does it. But government is at a macro level, we are at a micro level. For example, do you think is there any government in today's world saying no, everything we manage on loan? No. They get the loan from what do you call it? World Bank, they get the loan from IMF, they get the loan from third party also. Now in India, we have this what do you call it? RBI, the finance minister. They have the leverage of printing the currency notes only to certain extent. Have you heard about the Germany's hyperinflation? When America stopped during that 1929 depression, Germany started printing more and more currency. What had happened? Hyperinflation means to buy a bread, they used to carry cart full of money. You understand? Cart full of cart. Because supply was high, there was no demand. So neither they can increase the supply nor they can decrease the supply. There is certain leverage they do, but beyond that they cannot increase the money supply. In a country like India, there is always inflation. I say it is to a certain level, it is good. Neither we want deflation. Then what do you want? A controlled inflation and a controlled inflation. Now, ये सब मैं concept बात करता हूँ. I'm talking about nothing but the finance of the government. If I tell you actual finance in India, we have a account called CFI. It is also known by the name Consolidated Fund of India. What is it, CFI? अभी तो बोला. Consolidated Fund of India. Repeat. In fact, I say this is the treasury. You understand treasury खजाना. जैसे उस टाइम पर महाराजा के पास खजाना रहता था, जिससे वो अपना revenue चलाता था या kingdom को चलाता. Similarly, even we have. I think for last 4 or 3 years, the time GST has been introduced, India is doing absolutely good. They say every 3 months this GST collection is very good. And I think last GST collection was, I don't know how many. So they say government of India is in a very, very comfortable position. Now GST का कैसे रहता है? All the state GST goes to the central. And central keeps a part of it, and only when and how it needed, then only it allocates to the state. Like if you remember that Bengal, every time Mamata Banerjee keeps shouting, GST collection यहाँ से उधर गया but हमको मिला नहीं आता. And like we have Union Territory of Delhi. You understand Delhi, who's ruled by Kejriwal 50 and Attorney General 50. And Kejriwal सब free में बोलता है. Whatever he is going to say free, it is being charged by the central government, not by the state government. क्योंकि वो Union Territory है, समझा? But he is not doing that same thing in Punjab. Because Punjab does have a state and he has to give it from his pocket. And if he is saying 1,000 crores मैंने दे दिया, so before the central government gives the finance, they'll ask you. अभी ये सब तो मोदी नहीं पूछेगा. They have people like Attorney General, AG बोलते हैं उसको. Then Comptroller रहता है, Auditor रहता है. अभी आपको ये तीनों पर्सन कौन है नहीं मालूम है, आप समझ लो Chartered Accountant. Chartered Accountant for whom? For the entire country. Even when the check is given to Kejriwal or either, they will sign it. Even when they demand it, they will ask कि भाई तुझे इतना पैसे क्यों चाहिए और किधर गया उसका पूरा हिसाब दो. ऐसे नहीं कि आंख बंद करके देते. Alright. So when I'm talking all the slides, I'm talking nothing but finance, public finance. So look here.
It is a financial aspect of the government for a financial year. Why I'm saying financial year? Because in that financial year, apna public finance kaisa raha. Second, it is an investigation into the principle of state expenditure and state revenue. Is the word right? Investigation? Wrong. Who is investigating? Correct. Government. To whom it is investigating? From where the money is going? अभी तू अगर भूमि फिर से मांग रहा है तो मैंने पूछेगा क्यों इतना पैसे चाहिए? बोलेगा नहीं आपके पास से मेरा जीएसटी ना निकाल. बोलेगा ठीक है तेरा जीएसटी है, but what is the reason? If I blindly keep giving, he will be blindly asking 10 times. Correct. So it is investigation into the principle of state expenditure and state revenue. Only expenditure नहीं, state revenue का भी वो लोग investigation करते हैं. कहाँ से आया, कितना आया? Because in India the demonetization I failed to explain that. Mainly of course the black money. I told you ना that funding the terrorist. अभी देखो terrorist organization सब उतना नहीं है क्योंकि एक बार उनका money cut हो गया तो कौन जाके मारने के लिए जाएगा without money. Okay, so that is what we are saying investigation. अभी read करो first and second line and tell me what you have written in the notebook. Then I'll explain what is Bastable is saying. It is the government body which has authority to give the finance. पक्का अभी Bastable का कौन explain करेगा? Second read करना है explain. Public finance deals with the expenditure and income of the public authority of the states and nations. देखो, it is expenditure and income. Is it something expenditure and revenue of which authorities? Public authorities. India में public authorities कौन सा है? पहला municipal corporation, second is state government and third is central government. सबका revenue आता है, regularly जाता है, and of the state and their mutual relation. मैंने आधा थोड़ा सा काट दिया. What is mutual relation? How they are managing the expenditure and income. Do we have every year budget? What is budget according to you? Annual estimation of revenue and expenditure. वही तो हमारा बजट है. बजट क्यों बनाता है गवर्नमेंट? कि आने वाला साल का रेवेन्यू कितना रहेगा और एक्सपेंडिचर कितना होगा. If revenue is more and expenditure is less, it is called as a balanced budget. If expenditure is more and revenue is less, it is imbalanced budget. Generally, like time था कि इंडिया को imbalance ही आता था. अभी now we are having a balanced budget because GST everyone has to file. Whether you earn beyond the tax limit, but file तो करना ही पड़ेगा. हाँ भले टैक्स मत भर क्योंकि तू 5 लाख से नीचे है. Annually अगर तू 5 लाख नहीं कमा रहा, then you are not likely to pay any GST. But at least returns तो file कर. कहाँ से आया 3 लाख, कहाँ से आया 4 लाख, पूरा गवर्नमेंट के पास हिसाब जाता है. So he can't hide a single penny. So is it black money generation is controlled to a great extent? So this is what is public finance. Is it okay? Check and tell me. I want both of you tell me without seeing Bastable. Then we'll go into public revenue. To see the tax भरते समय क्या करता है? You know what is हाँ तेरा पूरा कहाँ से इनकम आया और कितना इनकम आया और उसके ऊपर तू कितना टैक्सेस भर रहा है, तू CA को फाइल कर रहा है ना. CA has to log it on the government portal. Hide तो फिर तेरा black money है. If you bring that black money out, then you will be taxed heavily. ये क्यों नहीं दिखाया तू? Correct. Come on, who can tell me Bastable? Quick. Then we'll go into public revenue. Yes. Public finance deals with the expenditure and income of the states and nations. Very good. How about according to Bastable? Bhumi, you. So उसमें ये तो भूमि बोलना. Okay, very good. Now put the next heading. Public revenue.
Will explain. Don't write it. We have to go on side. She coming for any other class? Are you sure? Today, because she is there in economics ना, because ये CA करके बैठी रहेगी वो, एक काम कर सके, ये अटेंडेंस शीट ऑफिस में दे दे, and बोल कि सर ने CA नहीं ले रहा है, सर इकोनॉमिक्स ले रहा है, तो भूमि का स्टूडेंट को मैसेज कर देने को, समझा? Ask the madam to call and tell that today it is outside. She is there in eco, na? She is not in attendance to eco scheduled there. But that is second lecture. First lecture also I am taking she may not be doing, na? अभी बोलेगा तो second lecture में at least आएगी. I don't know serious. How do you know? In between also she is not. Things are so careless. We have to run behind them. Electricity. GoPro बना रहा है. I think Ola का market तोड़ना चाहिए. Better है. Eighth. I have run that, but it's not. अच्छा है. मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा गाड़ी चलाता हूँ, बड़ा वो चला तो ऐसा लगता है कि किधर गाड़ी जा रहा है कि बिल्कुल नहीं आता है. और इसमें तो रेस आई थी तब. I took a test ride and it is 2.5 lakhs. उसमें इधर 450x डाला, तो मैंने उसको बोला क्या भाई 450 सीरीज 450 इंस्टा सीरीज का नाम 450. ठीक है बट I don't know what she said. When we are moving away from finance, now we talk about the word revenue. It is exactly opposite. Correct? Now there are two types of revenue. Every government gets it, whether India or abroad. One is a tax revenue, and other is a non-tax revenue. पहले ये explain कर दे. तना प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं. Generally in India we had earlier direct and indirect taxes. Correct? And these are customs. We can say quotas. Correct? Etc. Actually customs भी इधर आ जाएगा. Quotas generally and other government rules. If I want to explain direct and indirect, I said these are the generally tax. We say personal income tax. Is it a direct tax or an indirect tax? Direct tax. Whereas I am paying a tax called sales tax. What does sales tax means? The sales tax has to be paid by the seller, but he will pass the sales tax to the consumer. Correct? But he pay kisko karne ka? Seller, but he will collect it from the commodity where he is selling. So indirectly, consumer is clearing the sales tax of the seller. But now in India, there is no direct and indirect. Why? Abhi to GST aa gaya na. What is the full form of GST? Goods and service tax. There is only one tax all over India. आप कहीं भी जाओ GST भरो, बात खत्म. वो state को भरना है, central को भरना है, no tension. Now if I want to say non-tax revenue, generally these are those we say fines, correct? Penalties, and then the court fees. You understand court fees? I mean, somebody is convicted and he is getting a bail. उसका कुछ अलग ही नाम है मैं बोलता हूँ.
what they will do, you are allowed to release on a safety deposit of 50,000 rupees and 2 weeks of jail. So 2 weeks के बाद तू बाहर चले जा सकते और वो 50,000 गवर्नमेंट को चले जाएंगे. Correct? Whatever stamp duty, registration charges are all coming under non-tax. ये tax नहीं है, but that is also a part of public revenue. Now he asked me very beautiful question. One is expenditure. Public revenue. You asked me. And इसके पहले क्या था? Public finance. When I say public finance, हाँ तो ठीक है ना. Cost and expenditure both. अभी finance मतलब where the government is arranging its total finance, correct? So generally, if I say total finance, it comes in the form of either tax revenue, or so that it's a part of public finance. Is one part is the revenue. So finance मतलब क्या है? Where the government is getting the money from, and if it is getting strong from one side, it can relax on the other side. At time I said that only 40% of the Indian adult were paying the taxes. Only 40%. क्यों? Indirect था, indirect था, and it was VDIS scheme. You know what is VDIS scheme? इसको हम लोग बोलते हैं कि voluntary disclosure of income. मतलब मैं बोलूँगा कि 10 लाख कमाया है, but मैं बोलूँगा only 5 लाख कमाया है, and मेरा CA उतना ही पेपर बनाए. He will hide my next 5 lakhs. But now there is no VDIS scheme. Everything come under GST. 245. Is it 245? So we always believe either it is tax or a non-tax, which is a part of which finance? Public finance. So public finance not only talks about the expenditure, but also talks about where the revenue is coming from. So I say revenue plus expenditure is the public finance. So I say this has a very broader concept. This is a smaller concept. Revenue is only one part of our public finance. उसका expenditure भी देखता है. Correct? वो भी है. I'll teach you that. That's right. Meaning and example ना. पहले एक आपका non tax revenue लेते हैं, उसका तो only meaning and example. Non tax revenue refers to all such income which arises from other sources than taxes to the government. Other sources than taxes to the government. Other sources than taxes to the government. Full stop. It is the secondary mode of, it is the secondary mode of revenue to any government, primary being the क्या रहेगा? Primary being the direct. ये तो indirect है ना? It mainly includes administrative revenue, fee, license fee,
special assessment, fines and penalties. उसको 4 features बोलते हैं. 4 features and SGA. 4 features and SGAs. I'll tell you. Now let us go one by one. You won't know notes ना? देख लो. किसी में note. पहला हम लोग explain कर लेते हैं. One you understand, then you tell me which one you want me to notes. First read Saket administrator. The revenue accrued. हाँ. अरे example है ना, तूने ही बोला. Meaning and example both are there. Meaning I have given. These are examples of all non-tax revenue. If they suddenly ask you what is an SG, तब क्या करेगा? The revenue accrued are voluntary in nature and based upon the direct benefit received by the payer. If received from following sources. Okay, first one, fee. It is a payment paid by those who are benefited from the special service guaranteed by the government. All those utilized services may be just wait. What is this word special services? Now you go to every government hospital. X-ray is free, radiography is free, checking is free, medicine is free. फिर कौन सा फी गवर्नमेंट मांगता है? फिर तो मैं प्राइवेट में नहीं कर लेगा. रजिस्ट्रेशन फी रहेगा. कितने रहेगा? 100 rupees per person. ये पहला वो भी नहीं था. But then the services was not properly utilized. अभी at least आप अपना registration है 100 rupees में करें. Is it a fee? Yes. But based on that 100 rupees, what is the government going to get? Big money. But at least they are enrolling the people. At least to pay the 100 rupees, you'll come forward that your records are maintained. अभी आप कोई भी government hospital में चले जाओ. Except that registration and minimum, I think outside medicines, everything is free. I think in time that America was #1 country in providing social security benefits. You understand what is social security? All the adult citizens of the country till they retire or till they die, एक benefit scheme government देता था. अभी सबसे महंगा scheme India दे रहा है. What is that? आयुष्मान भारत योजना कितना है per person? 5 lakhs of insurance coverage. And that is not for you and me because we are into that APL. All those who are BPL and very poor. अभी जैसे दिल्ली में आप नोएडा या दिल्ली से जाएंगे ना हॉस्पिटल में, आपका ट्रीटमेंट थोड़ा better नहीं रहेगा because lakhs and lakhs of people go. But at least 1% is ready to get all the medical services up till 5 lakhs. 5 lakhs के अगर ऊपर जाएगा, so then they might subsidize them. Especially for the problem for cancer. Problem of kidney and और क्या आजकल बहुत महंगा चल रहा है ट्रीटमेंट. Okay. Nowadays even for this ladies related issues, a maternity deaths होता है ना? What is maternity deaths? When the child delivery, the child or the mother dies, लोग क्या करते हैं? जैसे ही वो प्रेग्नेंट करके करते हैं ना, तब से लेके डिलीवरी के बाद का 1 साल तक पूरा स्कीम कवर करता है. माँ को भी पूरा मेडिसिन फ्री, बच्चे को भी फ्री, correct? Everything the government takes care. So at least for that you pay ₹100. Is it okay? That is the first fee. Second, license you. License fee is the payment accrued. Not against the services but against the permission granted by government authority. अभी ये भी सिंपल वे में बता देता हूँ. At time था कि license was a must to start any job or any agency. Okay. But license का problem क्या है in India? It is very time consuming. अच्छा ये होता है. So उसके जो सब सारे होटल जो बनते हैं, बंद है. उसके ना अभी गवर्नमेंट ने ये slowly साइड पे ये लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. अभी गवर्नमेंट से कोई MOU मांगता है. What is MOU? It is a memorandum of understanding. ये आप कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं, COS बोलते हैं. कंपनी ऑफ सेक्रेटरी है, वहां से अप्लाई करो.
आपको 5 days से लेके 15 days के अंदर आपको ये MOU मिल जाएगा, वो भी ईमेल में मिल जाएगा। एंड इसका फीस मैंने सुना हार्डली 1000 रुपीज भी नहीं है, 1500 बस। अरे भाई कौन सा टाइम पे आता है तू? क्या? It's okay. You have come, that's good. Where's your other friend? No idea. Then, so when I'm using the word MOU, it really removes all the hurdles. क्योंकि लाइसेंस अप्लाई करना एक, वो मिलना दूसरा, उसका फीस मिनिमम 5 लाख रखता था। अभी फीस आस्किंग फॉर 3 स्टार और 5 स्टार होटल जाते हैं, लूज इट। और इतना जल्दी देता भी नहीं कभी। हम लोग बोलते हैं हमको जल्दी करने का, बोले तेरे से पहले 15,000 लोग वेटिंग में। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फॉर केमिकल इंडस्ट्री, फॉर हजार्डस इंडस्ट्री और एक्सेप्ट डिफेंस रिलेटेड, बाकी सबको लाइसेंस का जरूरत नहीं है। यू जस्ट गेट एन MOU। What is MOU? It's a memorandum of understanding. What is understanding? आपका कंपनी का नाम, who is the proprietor, क्या कर रहा है, plus government is allowing you for the next 5 years ये MOU चलेगा। फिर 5 साल के बाद आप उसको रिन्यू करना पड़ेगा। देखो, if you are living in a building which is more than 7 floor, what do you generally find? Fans, also fans. You should have firefighter equipments in your building. देखा है रेड कलर का पाइप हर फ्लोर में आता है, लोकल फायर फाइटर आके वो पूरा चेक करेगा। इंस्टॉलेशन करने के बाद जब तक वो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट चेक नहीं करते उसका एलिवेशन नहीं जाना। अभी 4 स्टोरेज में जरूरत नहीं, एटलीस्ट टू सर्टेन एक्सटेंट द फायर ब्रिगेड कैन गो, है ना? So everywhere government has reduced the work, so even for a license they charge you a fee. Is it a tax revenue or a non-tax revenue? Is it a revenue first of all? Why it is a revenue? अभी लाइसेंस के लिए कुछ खर्चा है क्या गवर्नमेंट के लिए? सिर्फ गवर्नमेंट परमिशन ही तो दे रहा है। हाँ, मतलब परमिशन दे रहा है मतलब तुझे लीगल दे रहा है, उसमें गवर्नमेंट को कुछ खर्चा है नहीं ना? Is it a tax revenue or a non-tax revenue? It's a non-tax revenue. So that is also a part of our public revenue. Is it okay? Chalo, read on. We are on page number. We are into this chapter. You got it? Good. Yeah. Good. So we are directly into what are we doing? Non-tax revenue. Uska types kar. Carry on. Special assignment. This can be. उसने पढ़ा ही नहीं license fee. अच्छा. It is special assessment. This can be called as betterment. Underline the word betterment charge. Carry on. Government carry on activities of public welfare such as construction of roads, provision of drainage and sanitation, street lighting. Why this is betterment? But to provide you street lighting, to provide you the clean and the green environment, to provide you proper drainage. Can the government come and directly ask you, कल हम लोग ने गटर खोदा तो तुमको देना पड़ेगा? आप बोलेगा नहीं चाहिए ना, हमको देखो देना। We are into this special assessment. Non-tax में है। अभी तो बोला मिल गया तुझे। Yes sir. बता उसको बता। So when you buy a 2-wheeler or 4-wheeler, you are expected to pay road tax. Why are you expected to pay a road tax? तो अपना गाड़ी किधर चल रहा है? रोड पे ही चल रहा है ना? चल रहा है कि नहीं? He's totally confused. अरे रोड टैक्स देना पड़ता है, इंश्योरेंस गाड़ी का भी लेना पड़ता है, इंश्योरेंस मेरा भी लेना पड़ता है। If I ask the government, I am paying every year a tax, road tax. What quality of roads you are giving? Nerul में देखो. Especially you enter into the station, the most घटिया road I have ever seen. At least फिर भी चलो. You go to Kharghar, it is the worst. Kharghar is under PMC. What is PMC? ये आगे TMC में पड़ता है. क्या है PMC? Thane Municipal Corporation. That is PMC. That is under Panvel Municipal Corporation. And I heard Kharghar is the builders where they have charged the people like anything. But इधर है घटिया quality of the road है. So we always believe when the government provides you all these charges, it is not free of cost. You are paid from your pocket. So that is called as special assessment revenue. Is it a tax revenue? No.
Okay, carry on. Which apart from providing common benefit also provides special benefit to those value of properties rights. But if we You are reading fines and penalties. Drainage, sanitation, street lighting, which apart from providing common benefits, also provide special benefits to those the value of whose properties rise. But there was a very popular actress called Shabana Azmi, Parveen Babi. In I think Jew area में कोई तो बड़ा बंगला है. She was a bachelor lady, unmarried. मरने के बाद उसका भतीजे लोग और बाजा लोग झगड़ा चला. ये प्लॉट आप लेगा, ये प्लॉट वो लेगा. जू में एरिया में तो सोच बीएमसी ने बोला छोड़ो, उसको अपना हेरिटेज प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया. You know what is a heritage property? It will be in the name of that famous actress. Public जा सकता है, देख सकता है, टिकट लेगा. मतलब till now the bhatijas and banjas were missing. What do you call bhatijas and banjas? Nephews and niece. All of a sudden they jumped in. मरी तो अकेले, कोई भी उसको देखा भी नहीं. But when she died, there was a tussle between the nephews and the niece. The government बोला ठीक है, nobody is going to get the property. We are going to hand over the property to the government. अभी government क्या कर दिया, उसको heritage declare कर. अभी अगर आपको उसका बारे में जानना है, उधर जा सकते. If you have seen that Gujarat Sabarmati Ashram, I haven't gone to Gujarat अकेले. मुझे लगता है कि एक बार जाना है. I heard Gujarat Sabarmati Ashram was very small when Gandhi was there. Now it is very huge. It is very elaborate. British Prime Minister. That's it. So when the people visit to Gujarat, they make it a point to go to that Sabarmati Ashram. उनको लगता है कि पता नहीं वो उधर जाने के बाद even the earlier Prime Minister Tony Blair came to India, he started doing the चरखा. तो गांधी जी का हाथ में बोलेगा यार मैं तो मर गया, मेरा नाम से ये चरखा काट रहा है. मतलब sorry to say, I heard all the Gujarati saying that is the highest visited places in Gujarat. उधर कुछ भी नहीं. I heard उनका थोड़ा बहुत सामान मन रखा है और ठीक है. And what is a big thing? मैं साबरमती आश्रम जाकर रहा. If you go and visit Statue of Unity, I'll say I heard उसका basement ही government ने बहुत बढ़िया बनाया. जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उतना बड़ा आयन का स्टैच्यू, that's a museum I heard. एक म्यूजियम है ना, म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, एंड people से जाता है, लिफ्ट है. अरे वाह, मतलब government has spent money like anything, and people say वाह क्या इंडिया में भी ऐसा स्टैच्यू. एक तो वो statue is out of gravity, that's what some science people say. Even the earthquake comes or any shaking, it will not move. उसका basement उन्होंने ऐसा बनाया है. It's full of made of iron. सोचो. And it's one of the largest statue ना in the world, next to Statue of Liberty. Scrap material. Okay. अच्छा तू जाकर आया तो ऐसा मालूम पड़ा. Okay. Why I'm saying all this? अभी तू Statue of Unity देखने जाएगा, you are asked to pay 100 rupees. Example, I don't know how much. Do you think that 100 rupees is going to give the revenue to the government? What is that 100 rupees for? Just for the maintenance. Do you think इतना बड़ा statue बनाया? We'll say, हाँ. इसको third lecture से second lecture से sign करना बोलो तो कब आए? आप lecture के बाद आए ना? So these are nothing but these are special assessment types. Why it is special? Everyone doesn't go there. In fact, I heard there is an water plane on one of the dam water. Directly it will fly to the Statue of Unity. वो भी बता था. मैंने इनको geography student को एक बार दिखाया था. India में water plane Mauritius government चलाता है. You know what is water plane? Takes off from the water and lands in water. And वो कौन सा है? Air Asia कोई तो company है. हाँ बस इतनी. वो तो नहीं. हाँ जाने तो good luck. कभी है. अच्छा, you got the news that I have completed CA? Don't know. तो कभी कैसे करेगा? पक्का? ये दोनों दोस्तों से नोट्स चाहिए तुझे? पक्का? सर अभी CA का ही है. कब है?
I have completed my CA portion. That's what I'm saying. This lecture also economics. Second lecture is also economics. Up till 2:45. 4. 4. You knew it or don't know? Sir, I Add some. So let us go to the next one. You read fines and penalties. And we keep explaining. sir, geography में कोई भी 5 चैप्टर ठीक है रुक जा ये भाई सब भी ज्योग्राफी के लिए बैठेगा तुझे सर अभी geography नहीं इकोनॉमिक्स ही है सर मॉक टेस्ट कितने बजे सर पता नहीं टुडे सर तो tomorrow here in the YouTube you know what time it is सर ठीक है मैं बात करता हूँ चलो he is going to have some revision for some chapters you also sit along with him और मुझे रिवीजन करना हो ना पढ़ना चाहिए साल भर मैंने पढ़ाया ना भूमि इज रेडी आप पूछना उससे अरे पूछ तो सही मेरे सामने क्या बोलता देख कि सर को तो रिवीजन करवा रहे ठीक है you see it's mindset colorless mindset अरे कभी कभी तो ऐसा भी होना चाहिए टीचर्स डे के दिन तुम लोग क्या करते हैं हाँ तो मना लेंगे ना छुट्टी होता है बट स्टूडेंट्स ऑफ द 10th स्टैंडर्ड टीच द है ना 9th और 8th में जाके पढ़ाते हैं तो आज हम लोग टीचर्स डे मनाए ना सके तू भी बैठ जा बस अरे मैंने दूसरे स्कूल में सब में गया है ऐसा केस तो ये 9-10 के बच्चे जाते हैं 9th में जाके अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और आप लोग जाके लास्ट में इसमें क्या है हाँ तो समझा हाँ ठीक है और ये भाई साहब जो भी आवाज से उनका बोलेगा बच्चे को ऐसा डराया आपने आवाज के बच्चे दैट्स वेरी गुड कभी अपना टीचर्स लोग ना हम लोग ने ऐसा डायलॉग यूज किया क्या चलो लेट्स गो ऑन विद द टॉपिक फाइन्स एंड पेनल्टीज तो तू यही पढ़ ठीक है मैं वही यही पढ़ ले रीड कर फाइन्स एंड पेनल्टीज वेयर आर यू सीइंग These are charges imposed as a punishment for violating the law like overspeeding or breaking the traffic rules. These are not considered as the major source of revenue for the government. If I talk about a violation, I think you and me know better. I think अपना पांडु हवलदार करता क्या है? एक उस दिन नहीं बोल रहा था. Everywhere, something or the other, you make the adjustment. एक टाइम था कि you are going to the court to pay the penalty, it's only 45 rupees. But वो लाइसेंस आपको कोर्ट से ही मिलेगा. आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में. फिर वो बुलाएगा, उस दिन जाएगा. तो ट्रैफिक पुलिस क्या बोलते हैं? ठीक है ना साहब, निकालो ना 200. आपका भी टाइम वेस्ट नहीं, मेरा भी टाइम. आप बोलते हाँ ठीक है 200. But that 200 is not going to the government. Ah. So whatever fines and penalties that you pay legally only will go to the government. अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत सीधा कर दिया है ना, सब ऑनलाइन पेमेंट कर दिया. He is taking a pic of your vehicle ना and he is sending it. ऑनलाइन कर देना. हाँ, मेरा एक दोस्त है, उस भाई साहब को कार को जरा स्पीड चलाने का आदत है, उसका तो 7,500 का आया फीस. 500 का है. तो इधर वाशी में आके भाई साहब रगड़पट्टी कर रहे हैं. बोले क्या? अरे पता नहीं यार 7,500 कैसे भी बोला हाँ हर सिग्नल तोड़ता है. अरे लोग ने कैप्चर कर करके एक साथ भेजे. He lives in Chembur. बोला यही होता है फाइन एंड इवन आई हैव डन. अभी तक तो मेरा नंबर पे नहीं आया. अभी मेरा भी इंश्योरेंस और वो क्लियर करूँ. Why I am saying all this? These fines and penalties are not for any income, but at least to prick you so that next time you don't repeat the mistake. Go ahead. Forfeiture. Forfeiture. Penalty is imposed by the courts for failure to pay rules to appear in other failure to complete contracts. Now, whenever you are unable to, appear in the court, unable to produce what the court is saying, you are asked to pay the penalty, but that is not in the form of penalty. Did I not say this? This is called as forfeitures. 50,000 का मुद्दल में 3 महीने के लिए मैं आपको बेल देता हूँ. जज बोलता है देखो, एक सेफ्टी डिपॉजिट भरने बोलता है. That safety deposit also is a part of the revenue. But is it a tax revenue? No, it's a non-tax revenue. That is forfeitures.
then you have to pay extra. You have to remain in the jail for the next 6 months. हाँ वो वही बोलेगा, अगर आप 50,000 भर रहे हैं तो आपको 2 वीक का जेल, अगर नहीं भर सकते तो 6 महीना रखो, समझा? So that 50,000 is a safety deposit so that you stay less and go out quickly. Next, ST under this government was seat बोलेगा तो बोलेगा estate. Go ahead. under this government acquires the unclaimed property or assets of without trust. Dissolve? Yeah, फिर से मैंने सुना नहीं. Dissolved trust. Dissolved crush. Trust. अच्छा, what does this dissolved trust means? I mean, there are 3 partners, out of which one partner is fully trustworthy. The other 2 have paid the fees for the government. The third person has not paid. So इन लोग ने उसका नाम से fees भर दिया. But this person has cheated. Correct. When they appear for the court, that he has to pay. देखो उसी में word आया cheat. You have escaped by cheating your partners. So these are special courts, not any. I mean, now we have ED. What is ED? Enforcement Directorate. ये सत्येंद्र जैन करके एक मिनिस्टर जेल में है. अरे आप पार्टी का, उसका वीडियो नहीं रिलीज हुआ, वो चमकी करवा रहा है, वो यही मिनिस्टर है. एंड आप पार्टी बाहर के क्या बोल रहे, उसका सर्जरी हुआ है, वो फिजियोथेरेपी है. हाँ, फिजियोथेरेपी किससे करवा रहा है? द पर्सन हु हैज बीन इन द रेप क्राइम, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो जंपिंग पे कर रहा है. उसके बाद और एक वीडियो है वेयर इज हैविंग ए 5-star लाइक लंच, और उसकी वाइफ लेकर आती थी. फॉर लास्ट 6 months दिस इज गोइंग. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ही इज द जेल मिनिस्टर ऑफ दिल्ली जो अंदर है. तो मतलब केजरीवाल तो बोलता है वो खट्टर ईमानदार है, उसका बोलने का तरीका ही मुझे बहुत पसंद, खट्टर ईमानदार है. उसको तो लोग अभी वो कौन सा अवार्ड बोल रहा है, प्रेसिडेंट अवार्ड देने का बात कर रहे हैं ईमानदारी. फिर अंदर क्यों है विजय बोलता, अंदर क्यों? अभी तक पनिशमेंट नहीं, बट अंदर तो है. हाँ, यू डिडंट गेट द प्रूफ. जिस दिन प्रूफ मिलेगा भाई साहब जाएगा जिंदगी भर के लिए. मतलब उसके पास 3-4 मिनिस्ट्री है एक साथ, अभी वो जेल में है. एंड मिस्टर केजरीवाल हैज नॉट फायर्ड हिम फ्रॉम द जॉब आल्सो. जेल में बैठे बैठे वो मिनिस्टर. व्हाट काइंड ऑफ दिस? जब वो केजरीवाल मिनिस्टरशिप में आया, उसने बोला कि मैं इस मिनिस्टर का वो वीडियो दे दो, मैं ये कर दूंगा, उस मिनिस्टर का मुझे डॉक्यूमेंट दे दो, मैं उसको फायर कर दूंगा. अभी तेरे ऊपर आया, इज वेरी क्वाइट. सॉरी टू से, यस ओपन लिकर शॉप्स एनी पार्ट एंड एवरी पार्ट ऑफ दिल्ली. मैंने तो सुना रेलवे स्टेशन में भी भाई साहब ने कोने में छोटा सा लिकर शॉप खोला. हाँ, इफ इट इज इन फॉरेन कंट्री वी अंडरस्टैंड बिकॉज़ देयर इट्स वेरी फ्री, बट दिस मैन इज डन. और उसमें भी गड़बड़ घोटाला. एंड पंजाब का पूरा इलेक्शन का खर्चा भाई साहब ने इसी से निकाला है. एंड अभी जाके गुजरात में चैलेंज कर रहा है मोदी, बोलता है 27 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, मैं ये फ्री में करूंगा, वो फ्री में करूंगा. अरे फ्री में करूंगा, बट क्यों फ्री में कर रहा वो तो बता. वो नहीं बता. इन दिल्ली ओनली मेट्रो ना, मेट्रो, all the ladies who are above 18 and traveling in the metro for next 3 months he made the fees free. तो उधर का काम करने वाले लेडीज ने बोला हम पेमेंट दे सकते हैं. Why are you making loss to the government? अगर तुझे देना ही है लेडीज को, वो जो काम वाली बाई है या ओल्ड लेडी है जिनके पास 150 रुपए का है ना टिकट, सिंगल टिकट इज 150 मेट्रो का. मैंने भी गया 1-2 बार इधर ही बॉम्बे में. इट्स वेरी कॉस्टली बट इट इज नीट एंड क्लीन. उनको दे. But he said no. और पंजाब में तो उसने और भी हद पार किया. All the 18 and above ladies will get 1,000 rupees per month in their account. अभी 1,000 rupees कहाँ से ला रहा वो नहीं पता. तो all the men, अभी मैं रहता तो बोलता अरे उनको 1000 दे रहा, हमको 500 तो दे. So these freebies is going to put a real trouble to government of India. But इसको क्या है, यूनियन टेरिटरी है, पूरा पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट देना पड़ेगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से इसको 2-3 फटकार भी लगाया. बट केजरीवाल है ना. देयर इज अ कंट्री कॉल्ड ग्रीस, इफ यू heard about it. Greece has totally collapsed because of all this unwanted freebies only. बट क्या करें, हमारा कंट्री में डेमोक्रेसी है एंड डेमोक्रेसी में हम कुछ बोल नहीं सकते. बिगेस्ट शॉक वो रहने वाला है
नहीं होगा मेरे ख्याल से. If at all in Gujarat BJP loses the election and AAP wins the election, क्या होगा? मोदी का तो कचरा. मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए because Modi has a very strong hold in Gujarat because for last 27 years BJP only ruling. And he remembers a time when Narendra Modi was the CM of Gujarat. और वो भी 15 साल तक वो भी CM रह चुका है गुजरात. So why I'm giving all this, because there are various cases of STs for which the court will penalize a person, and that is also going to the government as a form of revenue. Is it okay to check which one you want me to give? The rest things you can write on your own, or shall I give all one line? One liner de do fatafat. That will be better if at all the government will. Sir, one line. One line मैं देता हूँ, notebook में लिख लो. Put the heading. These guys are already writing public revenue. ये लिख दिया ना, tax and non-tax. Then you write types of non-tax revenue. Types of non-tax revenue. Administrative revenue is that revenue which arises through voluntary nature. Which arises through voluntary nature and based on the direct services received by the taxpayer. Direct services received by the taxpayers. Next, you write fees. Next, you write fees. Payment of this is mainly for the benefits. Which is received by every citizen on account of special services which the government provides on a routine basis. Then you write license fee. All the permissions granted by the central government. All the permissions granted by the central government
for which a legal permission in the form of license for beginning or running a business on account of all safety measures in compliance. You understand the meaning of the word compliance? Compliance मतलब जैसे गवर्नमेंट चाहता है वैसे तुम लोग ने सेफ्टी किया है. In compliance with that of government. जैसे अभी होटल के लिए सारा लोग मांगता है. Next. Fines and penalties will you write on your own? Chalo. Hello. Hello. Now he's having his booklet and writes. Because next time you pay the fines and penalties, you should know where is that money going. And try to avoid paying it. मालूम होने के बाद ऐसा मत करो. Don't break the rules. $145 is the break. 245 है. नहीं कुछ नहीं चुपचाप बैठ. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. जब पोर्शन खत्म करने का सर फोड़ रहा है तो भूख लगा तो बैठ आज करे. I give all kinds of facilities and you don't pay me back anything. मैंने गलती से बोल दिया 145 और भाई साहब ने 245 I need to give a break, correct? Good. By the time the portion before that is to go. Done. Let us write the next one. What is the next one? 4 features. वो मेरे पास रिजल्ट मैं देता हूँ. क्या है? You need which question answers you need? Special answers. वो मैंने नहीं दिया है. मैं देता हूँ ना. तो अभी क्या लिखा तुम लोगों ने? Written 4 features. So you want me to give a special assessment or 4 features? पक्का वो तो डायरेक्टली वैसे ही कॉपी करेगा. मुझे मालूम पड़ा. अच्छा तो स्पेशल असेसमेंट मैं दे देता. ठीक है. You directly copy. I am giving special assessment. तो ये थोड़ा बड़ा रहता है मेरे हाथ में. बहुत बढ़िया है. It simply means charges levied by the government
levied by the government. Levied. Levied मतलब implemented. By the government over basic sanitation and hygiene services. Over basic sanitation and hygiene. Careful with the word hygiene. Check the spelling. What is hygiene? Basic and hygiene services. Stop. In present time, government ensures, in present times, government ensures all the necessary facilities needed for a minimum standard of living. It may also include any levies or any taxes for increase in wealth and property. Yeah, double important for increase in wealth and property. Is the last line clear? अभी मेरे पास एक ही बंगला है, and that also in Palm Beach prime location है, for which I'm already property or a wealth tax. All of a sudden I am buying two more properties. One might be Malabar Hill, other might be Nariman. तो देवांग और ये बोलेगा एप्लीकेशन है बहुत छापा है, पाम बीच में रह रहा था, चल फिर भी ठीक है, मलबार हिल में लिया उसने. When I am going for the registration, government will ask me a special wealth tax. ये कहाँ से आया? तो क्या है ना सर, मुझे यूएस का लॉटरी लगा, तो निकाल पैसे किधर है? When I am buying a car which is not sold in India, जैसे सचिन का फेरारी कार, there's a movie called Sachin's Ferrari, देखा है फेरारी की सवारी? Sachin has not bought that car. It was a gift from the #1 Formula 1 driver. Formula 1 देखता है? हाँ, ये देखता है. कौन है भैया? उसको तो ऐसे ही पूछता है. पूछा था. There is a person called Fernando Alonso. He is from Italian. And वो Grand Prix में वो चलाता है, Ferrari चलाता है. And there were two brothers. One was Michael Schumacher, another is Raul. मैं पहले देखता था, अभी पता नहीं. चले मैं तेरे से. Michael Schumacher had heard of Mr. Tendulkar long time. Michael Schumacher is a properly German born and brought up fellow, but he has got the American citizenship. और ये बंदा नया ऑपरेशन के लिए अमेरिका जाता था. कभी टेनिस एल्बो इंजरी सुना है? टेनिस एल्बो क्या होता है अपना बॉडी में, किधर है टेनिस एल्बो? सचिन को कोई भी सर्जरी होना तो बीसीसीआई पैसा देता था और ये पैसा अपना बैंक में लेकर चल जाता. अभी वो याद है बहुत टाइम तक एक अजीब कलर का बेल्ट पहनता था मिस्टर सचिन, और एक गरीब सा बॉलर था, बॉम्बे का रहने वाला था, उसका नाम था अजीत अगरकर. नाम सुना है? हाँ, गरीब जैसा. क्यों गरीब जैसा? उसको महीने में या 2 महीने में एक बार इंजरी हो जाएगा ना, एक जयवंत ले लेता जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी, बहुत मोटा सा, बोलता था तेरे जैसे 36 बॉलर हमारे गली में खेलते हैं, तुझे क्या है, 2 मैच करे तो तीसरा में ऑपरेशन जा, हमारे पास पैसे नहीं. बट वही सचिन का स्पॉन्सर करेगा, क्योंकि सचिन इज द ब्रांड एम्बेसडर.
इंडियन क्रिकेट। तो ये भाई साहब उसका नाम क्या वाइफ का? गीता सीता, अच्छा नाम है ना, सचिन वाइफ। शी इज 5 years older to this fellow, डॉक्टर है ना। तो ये दोनों उधर गए हैं एंड माइकल शूमाकर मेट सचिन फेस टू फेस एंड ही वाज वेरी हैप्पी। ही इज अ पर्सन, एक रेस का जो पैसा है ना, मेरे ख्याल से सचिन 15 साल में भी नहीं कमाया है, एक रेस का फॉर्मूला 1 रेस, एंड ही हैज वन मेनी टाइटल्स। आप लोग देखता कि नहीं फॉर्मूला 1? नहीं मालूम नहीं व्हाट इज फॉर्मूला 1? I personally try to get the license. Forget about the Formula 1. मुझे go-karting का भी license ले लिया ना। I went to MRF Pace Academy in this academy in Chennai. And fortunately that is the time मेरा brother ने बाइक में गिरा के मेरा, तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप बॉम्बे का लाइसेंस इधर सबमिट करो, सर go-karting का लाइसेंस लेकर आओ, फिर उसके बाद F2 का पहला बनेगा, F1 का तो बहुत महंगा भी है, कुछ 15 लाख रुपए मेरे से बोला। फिर हम आपका 3 साल का ट्रेनिंग करेंगे, फिर जाके सोचेंगे कि F1 मिलेगा कि नहीं। वेरी डेंजरस गेम। There was only one fellow from India, नारायण कार्तिकेय, he was from Chennai. मैंने जितना भी रेस देखा ना टीवी में, लाइव सिंगापुर में गया था एक बार, पर बहुत महंगा था। तो नारायण कार्तिकेय नेवर केम इन टॉप 10, 15, 20, 12, 13 में आता था, और उसका जब घर दिखा टीवी में, उसके पास 20 या 15 गाड़ी एक साथ लाइन में खड़ा है एंड इस टॉप 20 में आता था। और ये माइकल और राहुल शूमाकर तो दोनों भाई लोग है ना, या तो माइकल या तो राहुल, फिर बीच में एक फर्नांडो अलोंसो आया जो इटली का रहने वाला। तो दिस मैन हैज गिफ्टेड द कार। सचिन को फेरारी कार मिल रहा तो ना थोड़ी बोलेगा, भाई सब कस्टम्स में डाला और इधर आया। तो इधर आते हमारे इंडिया का गवर्नमेंट का मुंह बड़ा खुलेगा ना, फेरारी इज वेरी कॉस्टली। उन्होंने मेरे ख्याल से कितना हमारा 7.5 या 9 लाख का वो लोग ने कस्टम्स ड्यूटी में ऑन सचिन्स कार। सचिन इज वेरी स्मार्ट, उसने बोला ये कार मेरा खरीदा हुआ नहीं है, ये गिफ्ट का कार है, गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं मारने का, बट ये लोग नाटक। तो सचिन ने बोला ये लो कार रख लो, मुझे नहीं चाहिए, आई विल फाइट इट इन द कोर्ट। I think for next 3 or 6 months it was with the customs only. But then I think किसी ने सचिन को आइडिया, ये सब मेरा एक फ्रेंड है शिवाजी पार्क में जो इस लाइन में डील करते हैं एडवोकेट, तो वो सचिन को किसी ने आइडिया दिया है you put a case against Mumbai customs। उसने क्या केस डाला कि my car is worth rupees crores and for last 6 months it is in Mumbai customs, अगर उस कार में स्क्रैच भी आया I will put a big penalty or a fine on the by customs। कस्टम्स वाले हिल गए, लोग ने बोला तेरा कार के लिए हम लोग अलग से सिक्योरिटी रखता है, उसको हमको पैसा नहीं पड़ता, तो तेरा कार लेके जा, हमको ड्यूटी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट 5 years के लिए उस कार के लिए कौन सा कंपनी सामने आया, कैस्ट्रॉल है कोई कंपनी सामने आया, इट रिक्वायर्स हाई फ्यूल पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल नहीं भरता उस कार में। और फिर कोई कंपनी आया, उसने बोला कि 5 साल के लिए ड्राइवर भी फ्री, कार फ्री, पेट्रोल फ्री, ड्राइवर फ्री। एंड यू वॉच दैट मूवी फेरारी की सवारी, सो नाइस लिटिल मूवी। देखा है? कौन है वो? आयुष्मान है ना उसका नाम, आयुष्मान नहीं, आयुष्मान खुराना, वो 3 इडियट्स में वो माधवन के साथ काम किया ना, 3 इडियट्स। हाँ वही शर्मन जोशी, सही एक्टिंग की है। I really love the movie, even उसका जो पापा है उसने भी अच्छा काम किया, इसने भी अच्छा काम किया, उसका लड़का क्रिकेटर बनना चाहता है। नाइस मूवी। ये मूवी ऐसा देखने के बाद हमको लगता है कि आजकल के स्टूडेंट्स देखना चाहिए। सॉरी, ये पूरा रामायण से मैं शॉर्ट करता हूँ। तो जब भी आपको ये कस्टम्स रिलेटेड ड्यूटी टैक्सेस लगता है, वो भी गवर्नमेंट को ही जाता है, बट इज इट एनी टैक्स रेवेन्यू? इट्स अ नॉन टैक्स। ओके, चलो राइट डाउन फुल फीचर्स एंड हिस्ट्री, देन वी गो अहेड विद द टॉपिक। Out of the 3, who is more Mukhan? You. How about Saket? Very good. तुझे नहीं भेजू ना भूमि? क्यों?
हम तो लग में मुझे भी तो लग रहा है मैं थोड़ी जा रहा हूँ हाँ तू मुझे खिलाएगा किधर है खिला से याद है मेरे साथ अभी 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 देखा मैंने नीचे करा ये told you once he had told me on Insta बोल सर आज याद कर रहा था उस बारे में नहीं ऐसी जनरली सभी काम क्या कल आया था कल अच्छा कल बट आवर लेक्चर इज बिफोर द after 4:25 I start or 4:50 tomorrow also we have 2 lectures tomorrow क्या you relax for 5 minutes जा कुछ लेकर आ खाने के लिए मेरे लिए नहीं तेरे लिए अच्छा हाँ हाँ तो इसके लिए भी लेकर आ जा देवम तुझे कुछ चाहिए क्या अरे बोल दे वो उसका पॉकेट से डालेगा नहीं अरे हाँ बोलना वो डालता है go and get something for him and for you also it's more like an official finance thing meet them and show you certain things हाँ जी हाँ फिर ठीक good boy तो इतना दिन किधर why did you join CA का तो मैंने पूरा फाइंड अप ही कर दिया बस and that your friend she came 2 days online उधर ब्रांच पे जाने का और क्या है हाँ Yes, sir, online करना। देख ले when you if you are going for the test day after the test there will be a break then you join me from their online also that's also allowed Sir, link ना। link वही कुछ नहीं है अपना zoom id पे उल्टो की join करके देगा you don't know you are going for the branch now for tomorrow's test and then they will make you to join let us understand this certain points कभी है you got your date December your school yes sir did they cover up all the portion sir CA का नहीं हुआ क्योंकि when बैंक भी थी CA का प्री बोर्ड्स में 2 और तूने इधर भी अटेंड नहीं किया क्या कर क्या रहा था तू सर and you don't want the notes also you are saying yes sir I don't then where do you study from तो ये के कैंसिल है बोल रहे हैं क्यों ये पूछ ले इससे there are many things which are cancelled और तो सिर्फ कमर्शियल के लिए प्री बोर्ड्स में 2 टैक्स आए कि मैम का सिलेबस हुआ और मैम बेसिकली हां वहां से भी ऐसे बहुत अपोजिशन नहीं हुआ और वो रिपोर्ट में निकाल दिया कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा सर पब्लिक रिलेशंस और इशू अरे बाबा that is the 2 chapters we have explained in detail तो ले ले नोट्स इनसे and what is that issues of demand इन्वॉल्वमेंट अच्छा वो भी हम लोग ने कर नोट्स दिया ना मैंने हाँ इनसे ले लेना और जेरॉक्स कर ले नहीं सर मैम मतलब अभी कर देंगे प्री बोर्ड से पहले कर देंगे but is she going to give you notes no I see ठीक है ठीक है I leave it to you सर बट ऐसे नोट्स नहीं देते क्वेश्चन आंसर तू इतना बड़बड़ क्यों कर रहा है इससे ले जेरॉक्स मारना दिखा उसको दिखा पहले अब पहले ले ले अभी ले ले ये ना बहुत ठीक है नहीं देती है फिर ऐसा नहीं दिया तो ले लेना भाई जब वो दे रहा है इस टाइम में लिखा है
Public links guideline. Many portions are removed. Maharashtra, Solapur and Akalkot may be handed over to Karnataka. Solapur भी जाएगा कर्नाटक को. Solapur is main with Belgaum हो जाएगा उनको. Yeah, already झगड़ा चल रहा है. But Solapur is properly in Maharashtra only. Why it isn't? Had asked to Karnataka Chief Minister Baswaraj Bommai had staked the claim to Solapur and the holy town of Akalkot. काफी टाइम से झगड़ा चल. What is this Akalkot famous for? You know, Solapur is but very big, is it? मैं गया बस में भी गया. Temple town. Is it closer to Karnataka? Yes, पता नहीं. अरे ये शिरडी गए ना तुम लोग. सनी सिंगापुर गए हैं. सनी सिंगापुर से 5-10 किलोमीटर में गुजरात स्टार्ट हो जाता है. 5 किलोमीटर भी नहीं है. सनी सिंगापुर इज एग्जैक्टली टू द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र. मैं तो बाइक में जाकर आया ना और आधा रास्ते में अच्छा मैं नीचे उतरा नहीं तो सीधा वो हाईवे मुझे सीधा गुजरात लेके जा रहा था. कंटिन्यूअस फ्लाईओवर ना से पकड़ा मैं यार भी नहीं. तो किसी को मैंने पूछा भाई साहब आपको गुजरात जाने का मतलब गुजरात नहीं सिटी उतरो ये फ्लाईओवर चल रहा है. इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेच. एक बार तूने पकड़ा इट विल मेक यू टू एंटर इनटू गुजरात. क्योंकि व्हीकल का नंबर चेंज हो रहा है ना वो मुझे मालूम पड़ रहा है. जीजे आ रहा है. एमएच का नंबर कोई भी नहीं. मैं अकेला एमएच नंबर का बात कर रहा. हाँ इट्स अ रियल कॉमेडी. फिर आते समय मैंने शॉर्टकट मारा. Tell me for you which part of the topic economics, because these two guys I'll teach you in the end 15 minutes of geography. Which are your subject combination? Eco, CA, English, maths, politics, English. That's it. Only 5. So there are best of 4 गिना जाएगा या best of 3? Best of 3. Because these guys might be going for best of 4, I think. They do not. You haven't taken maths, is it? Sir, I think. No, sir. It's compulsory in ASCII. Math लिया है तुमने? लिया नहीं सर. लेना पड़ता. Compulsory था. तो compulsory है तो तेरे पास है ना subject. अच्छा इधर नहीं लिया है सब. But you are there in math. Sir. अच्छा you are in geography instead of math. No sir. सब में है. अच्छा. So how about that girl, your friend Sandali? Is she also there in math? She's in math. अच्छा. कैसा school combination देता है. For science, entire science is removed. You get which subject for? And CA? CA is option आता है. Option में आता है. But other children have not taken ना. No, so P mastery of CA and P भी है physical education ना. और compulsory वाले geography history उसमें फिर तो नहीं है. For that you have taken math. नहीं, geography history तो never study. अच्छा you are also studying geography, but here you have not taken. Here your math, eco and P. But नहीं, it's fine. English and Hindi का test थी. Sir, public expenditure और public health
है ना, किया हम लोग ने. Did we do? Public expenditure and debt. Check. So किया हम लोग. Check करो भाई. public in the other chapter. I will be doing it. Why will I leave that? Sir, I was saying that it's very short. That's okay, but I will be doing it. Whether it is short or lengthy, but I have to do it, man. That's okay. Start करो आने तक क्या next topic क्या है देखो. Not tax revenue. Tax revenue. So the commercial revenue. But commercial revenue is not a part of the chapter. So commercial from gift and grants. चलो फिर मैं दे देता हूँ. Commercial and gifts and grants है ना. चलो start. Why are we wasting it? So one is commercial revenue. Put the heading. Another is gifts and grants. Okay, so let's write commercial revenue. Under this, those revenue. Under this, those revenue which are collected through by way of prices, by way of prices paid for government produced goods and services, by way of prices paid for government produced goods and services. Example, postal charges, toll taxes. अब toll taxes किसके लिए कवर करता है गवर्नमेंट? जो एक्सप्रेस वे से तो ट्रैवल कर रहा है उसके लिए टोल टैक्सेस देना पड़ता है ना. पोस्टल चार्जेस, टोल टैक्सेस. So for example, postal charges, toll taxes, interest on loans from nationalized banks, and tuition fee. Notice the tuition fee na, of a government school. मतलब बाकी फीस कुछ नहीं पूछता, only tuition fees पूछता है. Read this and tell me ये भूमि क्या बनाने गया क्या क्या किधर गए? Slowly read कर लो. By the time it comes and ask me which is your doubt. No, silently read it. You have any query, ask me. So consumer awareness. हो गया ना? We have done ना? We have done. So please do. या तो तुझे पूछना है या नहीं पूछना, खुद ही पूछ ले. तुझे चाहिए तो ले ले, उसे नोट्स दिया है मैंने, एक्सप्लेन भी किया है. We are explaining details of public relations ना, that we have done in full and detail. बस इसी के लिए थैंक्स बोल, कभी टीचिंग के लिए रोज ठीक है देखता हूँ. सब मार्क्स आना चाहिए, नहीं आए तो आपको तो मालूम रहेगा.
कर लो जल्दी से करते हैं. अच्छा you have it. Hey, if you are hungry, go and get something. अच्छा है बेटा. मुझे क्या अभी टाइम ब्रेक चाहिए. लेक्चर ब्रेक. So today after my 2 lectures, you guys are going, na? Unlike that day. Yeah, we have completed one small topic. Let us write the next. What is the next one? Commercial revenue I've done, gifts and grants. All the gifts and grants in aid, all the gifts and the grants in aid from any individual, in aid, hyphen आएगा दोनों जगह पर. From any individual, foreign countries, national or international organization, forms a very small portion of the public revenue. Forms a very small portion of the public revenue. Underline that word, very small portion. Why I am saying this is also a revenue for the government? Is it so? I mean, for example, you take case of Modi only. Did I not show you last time when he went to G20, what all the gifts he had given to all foreign ministers? And he's very particular in giving those gifts which are very rural part, interior part. Similarly, even Modi might have also got a gift from different leaders. So when he brings that gifts to India, I think Modi is the only prime minister in India. I think Baki log karta tha ke nahi malum, but at least we come to know about Modi. He has created a separate grant in aid. Jitna bhi usko shawls rehna do ya unique piece rehna do ya talwar rehna do, he gives to that brand and they auction it. And auction what? That this is given to Modi with a signature and so photograph. And abhi agar socho us commodity ka 1 lakh hai, for example. Auctions have taken for 15 lakhs. And then, I think he is doing a very noble job, है ना? बोलते कि मुझे वो गिफ्ट्स का कोई जरूरत नहीं, but at least वो 15 लाख हमारे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आएगा. I mean, look, he might have kept anything and everything what he earns and keeping in his house, it's okay. But even that he is selling and bringing that money back to India for some programs which might be for the common citizen. So is it grants in aid? Yes. Is it any gifts? Yes. Given by whom? Foreign national, foreign citizen. Does he convert that gift into the form of revenue? अगर वो गिफ्ट के रूप में रहेगा वो रेवेन्यू बनेगा नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? Because it is not in cash, it is in kind.
So unless and until the kind is not purchased by anyone. For example, I can say when Vijay Mallya was at his peak in India business, he purchased Gandhiji's footwear from South Africa. I don't know how many lakhs or crores of rupees he purchased. अभी सोचो एक साधारण चप्पल साउथ अफ्रीका से इंडियन लाया उसके लिए इतना वो भी विजय माल्या सबसे ज्यादा पेट किया मुझे तो ये टेंशन आता कि गांधी जी ने अपना चप्पल उतना दूर क्यों छोड़ा जब साबरमती में छोड़ता आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दीस अभी वो चप्पल रख के करेगा क्या मिस्टर माल्या कुछ नहीं करेगा I don't know how many of you know about this Mukesh Ambani. Whenever he is sponsoring World Cup in India, the original World Cup बोलता ना हर कंट्री में जाता है जब भी वो बॉम्बे में आता है वो वर्ल्ड कप 2 दिन के लिए रिलायंस में रहता है सोचो वर्ल्ड कप जाके कोई कंपनी का दरवाजा पे रहेगा तो कितना प्रेस्टीज and that is the amount of money he is pumping into that World Cup. Some of my friends are in a very big position in that company. ये तो कि वर्ल्ड कप मेरा कंपनी में आया मतलब तू क्या उसमें बैठा है क्या नहीं बट हमारा कंपनी में है सोचो ना अभी this FIFA World Cup is going on correct where it is in Qatar is it for the first time in the world history it is in Qatar एशियन कंट्री में वो भी जा जाके वो फालतू मुझे तो गाली देने का मन करता है क्योंकि एक तो उन्होंने उसको लाया हाँ हार गया कतर इज आउट कतर तो वैसे भी टीम नहीं थे अरे सोचो ना इनकम कितना मिलेगा अभी कतर इज But Qatar has spent around 200 million. हाँ तो सही अभी वो इनकम थोड़ी आया अभी तक तो लीग्स भी नहीं खत्म नहीं हुआ ना वेट फॉर द हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अभी पूरा लीग खत्म तो होने दे है ना वो कौन है उसका मेसी है लियोनेल मेसी अरे बाबा ये कैन पुल पीपल फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड He's playing from which club now? Argentina. Lionel Messi. Country, sorry. Argentina. But he's there, na? They're in the game. So why I'm saying all this? These are big money which is coming. But these money, when it adds to the government's revenue, even that is a part of revenue. Okay, let's finish it off this. So these grants and gifts granted by state authorities, you have to write these grants and gifts granted by state authorities or big organization to the smaller ones it might be a form of revenue to that government. Okay, that's it. So did we do tax, non-tax khatam? So we have tax revenue, correct? And direct indirect भी है ना उसके बाद tax revenue. Characteristics of a good tax system नहीं है direct and indirect advantage is there disadvantage also मैं पास लिख देता हूँ हाँ only explain it अभी मैं only indirect tax revenue दे देता हूँ notes में फिर बाकी the rest things I'll mark it write down tax revenue taxes are compulsory payment. Taxes are compulsory payments made to the government by all the earning individuals, made to the government by all the earning individuals and it is collected. Something you left.
आता सर वो And Aarti, कैसे सर हाँ बस ठीक है, फिर कैसा है? Yes. Good. And today guys say, पहले बताइए. हाँ, by both central and state government to meet its general expenses for the whole country, not for the whole country. General expenses of the whole country. Full stop. One more sentence. Every government aims to increase the tax base which may in turn increases the tax revenue. That's it. इसका टाइप्स वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्टली आ जाओ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एक काम करो, instead of me explaining, I will make you to learn in a very simple and straightforward manner, and that you will never forget also. We are under tax revenue, correct? ऐसा करो, इधर लिखो advantages, notebook में बना लो, and इधर लिखो disadvantages. Only write one word. You understand? चलो, ये start करो. Advantages, only one or two words. In fact, वो लोग ने heading दिया है ना? वो लिखते जाओ, then I'll explain one by one together. Advantages and disadvantages of tax revenue. Heading जो दिया वही लिखना. Sagi didn't get it. सब heading दिया है ना? Advantages में कितना points दिए? हाँ, tax वही मैंने ये wrong कर दिया. Direct tax, sorry. Revenue में डाल दिया. Direct tax na. So make two columns by putting the heading direct tax advantages and write only the subheading on both the sides. And then we'll discuss one by one all the subheading. Wait, let these two guys do. Then we will explain. What is the first? Achha, these two guys are writing. Now, what is the first one point under direct taxes? Bhumi. advantages. Equal. So what is the meaning of the equitable distribution? Whether the rich or the poor, correct? Everyone has to pay as per their source of income. Read it now. What is given? You only. Direct tax and equitable tax is equitable in the sense that it is divided according to the
tax in the capacity of the people, the rates of direct tax, like income tax can be fixed in such a way that higher the income of man, the greater is the rate at which he has to pay the tax. Now, if I want to say that taxes in India are progressive, what is the meaning of the word progressive? The rate increases somewhat. But according to certain debates that we have took part in the college, we say it is not good. वो बोलेगा कि मैं इतना मेहनत करके इतना ज्यादा कमा रहा हूँ उतने ज्यादा कौन गवर्नमेंट ले लेती अभी some developing and even India is thinking of that कि reduce the taxes and increase the revenue. पहला कैसा रहता था increase the taxes जितना टैक्स बढ़ेगा उतना पब्लिक चोर करेगा बढ़ता है नहीं बढ़ता but then government क्या करे it's a developing country like India where government of India is taking huge loans correct. And the first and the most important thing to cover up the loans is what? Your direct tax. समझ में आया? Is it equitable? To certain extent, it is equitable. Okay. Radhevan, second point, second advantage. Sir, हाँ ठीक है ना चलेगा. First one पढ़ ले. economic. Direct taxes are economical in the sense that the cost of collection of these taxes is relatively low because it's from same officer who assess for income of property. Look, every time when they collect the tax, na, the government goes for this point called economy. What is economy? The amount of tax I collect, the amount of 3 tax officers that I pay is half. मतलब तुम तीनों का payment मुझे double pay करना पड़ता है. And what tax you bring to me is only half. And will I maintain that department? बोलेगा नहीं चाहिए तुम घर जाओ. क्यों? क्योंकि जितना टैक्स आप मुझे कलेक्ट करके दे रहे हो उसका 3 गुना तो मैं आपको पेमेंट दे रहा हूँ. So isn't that tax economy? It is uneconomical. What is uneconomical? गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिलता है बट वो डिपार्टमेंट मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करता है. Did we talk about that voluntary retirement scheme? Out of that 60 years, some people are getting retired 58, 59. क्यों? हाँ, because अभी गवर्नमेंट ने 96 के बाद या 97 के बाद जिसने भी गवर्नमेंट में ज्वाइन किया उसको पेंशन्स नहीं है. क्यों नहीं है? Because जो पेंशन का डिपार्टमेंट मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा करता है, it is 10 times higher than what is the people are getting the payment. Understood? एक तो पहला उसका पूरा PFDA याद है ग्रेचुटी सब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, वो कैलकुलेट करो. कब रिटायर हुआ उसका फाइल मेंटेन करो, कितना साल जिंदा है, फिर उसको टैक्स उसका इंस्टॉलमेंट बनाते जाओ. तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? आफ्टर 96 97 whoever is retired, government will not give you any payment, pension. Why? Maintaining the people who are working in the pension department. Understood? Government is paying 10 times more than what is actually pension. तो अभी गवर्नमेंट बोलता है एक काम करो, आप रिटायर हो रहा है, आपको मैं एक ही शॉर्ट में VRS दे देगा. VRS मतलब एक लमसम दे देगा, आप उसको पेंशन फंड में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ या जो करने का करो. इससे किसका सरदर्द कम हो गया? Government का सरदर्द. Now you understood the meaning of the word economy. If the direct tax is economy, means maintaining the people who are working to collect the direct taxes less, and how much they are bringing the taxes more, it is okay. अगर if it is uneconomy, government बोलेगा direct tax को ही बंद कर, नहीं चाहिए. ठीक है? Second, next point. Certainty. The tax certainty. Certainty, and that is correct. The taxpayer know how much they are going to pay and at what time they are going to pay the tax. The authorities also know the amount of revenue they can expect. There are certainty on both sides. This minimizes the corruption on the part of collection. What is the meaning of the word certainty? First, my income for this financial year is 5 lakhs. The government says you have to pay only 7% out of the 5 lakhs. Neither the CA nor any middleman can play a role of corruption. क्यों? मेरा हर मंथ आके चेक सीधा अकाउंट में जाता है और वो अकाउंट का बैंक डिटेल्स गवर्नमेंट को मालूम है. Correct? I cannot hide the income. Similarly, some people will say, "Sir, आपको 7% है ना? हम आपको 5% में करवा के देते हैं." मैं उल्टा कम बोल रहा हूँ. We pay 36% from our tax, highest professional tax. मिलता भी है, मैं अभी 2 साल से टैक्स फाइल करके ले रहा हूँ, मैं कितने साल से तो लेता भी नहीं. What does that mean? The certainty is from both the side.
Certainties from both the sides means both from the government and from the individual. If my annual income is this much, I need to pay this much percentage to the government. And government will calculate like me, there are 10 lakhs people, for example. So government बोलता है कि अलगे जैसा 10 lakhs लोग है, तो 1% 5% दे रहा है, तो 10 lakhs people का कितना percent आ गया, government भी calculate करके बैठेगा. Is it a revenue for the government? Yes or no? Yes. Based on the revenue, will it not take expenditure also? Yes. So that is the good thing about which tax? Direct tax. It is certain. Next. Bhumi. Elasticity. Hmm. But direct tax can be paid according to the needs of the government Hmm. and changes in the income of people. When the income of the people goes up, the rate of income tax can also increase. Hmm. The income of the people falls, the rate of income tax can be lower. Okay. May if I remember that economics elasticity chapter initially I taught you, correct? Higher is the income, higher is the tax. Lower is the income, lower is the tax. Is it very simple? So it is a motivating factor and sometimes it is a demotivating factor also. Motivating factor for the government. आप ज़्यादा कमा रहे हैं ना, हमको ज़्यादा tax pay करो. You and me as an individual, पूरा मेहनत तो मेरा है, मैं क्यों government को tax pay करूँ? So that's why in Aristotle, you remember Aristotle, the person? अरे भाई, जिसने democracy का definition नहीं दिया है. So Aristotle said government is a necessary evil. What is necessary evil? हमको चाहिए भी है, but वो evil भी है. Can you call your parents as a necessary evil? बोल दे भाई, मैं नहीं बोलूँ. पक्का? हाँ. देवान? पक्का ना? Why you call them necessary evil? Because they make you only to study. They never ask you to चल भाई आज तो पढ़ाई मत कर. चल आज तू बुक्स का हाथ भी नहीं लगाने का. कभी बोला पापा मम्मी ने? कभी नहीं बोला. तो आप लोग बोलते हैं नेसेसरी इविल भी नहीं है हम लोग. अरे इविल का मतलब नॉट बैड थिंग, मतलब हमको चाहिए. बट व्हाट दे से वी डू नॉट लाइक. अभी आई नीड अ गवर्नमेंट, आई नीड अ टैक्स आल्सो, बट आई डोंट लाइक व्हेन इट गोस फ्रॉम माय पॉकेट. अंडरस्टूड? अभी मैं बोलता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए. आई नीड द सिक्योरिटी, आई नीड द रोड्स, आई नीड द स्ट्रीट लाइट्स, आई नीड द ड्रेनेज, आई नीड द ट्रांसपोर्ट. बट सॉरी मैं टैक्स नहीं भरूं. या ऐसा हो गया जैसे कि आपको मेला जाने का, सब स्टॉल में जाने का और खाना भी खाना है, और फिर बोलता पैसे नहीं है मेरे पास, वो धोएगा नहीं तुझे पकड़ के. सो दिस इज व्हाट टुडेज जनरेशंस आर. अभी एटलीस्ट yesterday only was watching what Mr. Modi was speaking, I think in Gujarat only. You are saying 10 years before what kind of people mentality and now what is the mentality. I is correct to certain extent. आप लोग कभी रेलवे या फ्लाइट टिकट बुक करता है ना, उसमें सीनियर सिटीजन के लिए कंसेशन मिलता है. तो आई रिमेंबर द डे व्हेन मिस्टर मोदी सेड कि कंसेशन ले लो, मना नहीं कर रहा, बट दोज हु आर वेल टू डू, है ना, जिनको लगता है कि ये 150-200 रुपए का कंसेशन में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उधर बोलो कि मुझे कंसेशन नहीं चाहिए. तो वो कंसेशन किसको जाएगा? बेचारा जो गरीब है and who is actually 60+ and who doesn't have the money, that concession will go to him. I don't understand what I'm saying. So he said more than 1.5 lakhs of people in one season tickets, they all said no, I don't want concession. ये जो सिलेंडर हमारे घर पे आते 1000 रुपीज ना, 1000+, you know, उसके ऊपर भी सब्सिडी है. But city people, those who are good to pay 1000 rupees for that cylinder, आप बोलेगा नहीं मुझे उसमें सब्सिडी नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट आपको 1000 रुपीज नहीं देगा. यू गो टू विलेजेस, दैट सेम सिलेंडर कम्स फॉर आई थिंक 695 और 700 रुपीज ओनली. क्यों? उसके भी सब्सिडी मिल रहा है उनको. बट यू एंड मी, कमाई तो बहुत है, फिर भी हम सब्सिडी लेते हैं. तो बोलता है उसमें भी बहुत सारे पब्लिक ने वॉलंटरी बोला हमको नहीं चाहिए सब्सिडी. व्हाट इज दिस रिफ्लेक्ट्स? that today's generations are ready to pay the taxes since they are earning more. अभी तुझे भी वो कंसेशन मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, उसको भी मिल रहा है, बट जेन्युइनली भूमि को ही चाहिए वो कंसेशन. बट ये लोग दोनों भी वो फॉर्म भर रहे हैं. भूमि बोलता है तुम्हारा तो अच्छा है, नहीं ना, गवर्नमेंट दे रहा है, मैं लूंगा. देवांग बोलता है मैं भी लूंगा.
सो ट्रबल किसके लिए होगा? भूमि जैसे कैंडिडेट के लिए होगा. बट आप लोग दोनों बोलते सॉरी सर हम दोनों को कंसेशन नहीं चाहिए, लेट भूमि गेट इट. तो भूमि विल थैंक यू. क्यों? बिकॉज यू वॉलंटरली सेड नो टू इट. समझा? सो दिस इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इन द डायरेक्ट टैक्सेस. नेक्स्ट पॉइंट साकेत. Productivity. Direct taxes also. ये मत मैं बोल देता हूँ. Whenever we use the word productivity, taxes, especially direct taxes, are mainly levied on the productivity. आप जितना कमाओगे उसी के ऊपर मैं टैक्स मारूं. बट आप घर बैठे बैठे बोलते हैं नहीं सर आपको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, मैं तो कमा ही नहीं रहा हूँ, किस बात का टैक्स दूं? So directly, indirectly, what I am encouraging you, you also earn and make me also earn. आप बोलेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है. गवर्नमेंट बोलता कौन बोला? We are ready to provide you a loan which is worth 10 lakh. And out of the 10 lakh, you are expected to pay back only 6 lakhs flat. And that also after 3 years, you are saying you are incurring loss. So 6 lakhs भी भरने का जरूरत नहीं है. ये मोदी गवर्नमेंट का स्कीम, but not for gents, only for ladies. At least ladies लोग सामने आया है. I'll tell you that loan scheme I forgot. Means what? Government is ready to help you at any time to make you more productive. When you start earning more, don't you think you are automatically paying the tax? जब कब आपको पिंच लगता है कि टैक्स नहीं पे करने का? Yes, income is less, but the taxes are more. I can tell you, I think 17 and 80, when income tax in India was as high as 70%. You understand 70%? मतलब आपका 100 रुपए से गवर्नमेंट 70 रुपीस ले रहा है. Because that time India was having highest boom. हर सेक्टर में पैसा बहुत उछल रहा. अभी ऐसा नहीं. गवर्नमेंट इज फिक्स मैक्सिमम 40% only. 10 से स्टार्ट हो 20%, 30%. जैसे जैसे आपका इनकम स्लैब बढ़ेगा वैसा वैसा टैक्स भी बढ़ेगा. इज इट प्रोडक्टिव? यस. द मोर यू आर अर्निंग, द मोर यू पे द टैक्स. लेस यू आर अर्निंग, लेस यू पे द टैक्स. अभी रीड कर लो सैलरी प्रोडक्टिव. Direct tax. नो नो, यू डोंट रीड, एवरीवन विल रीड. बाय. इसलिए मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया. कुछ पॉइंट्स तो मुझे भी आता है. पक्का? Shall we go for a break? And it's a 15-minute break, and we'll meet. Actually, हुआ भी नहीं है. Have your session? We can go.